अभी एक फिल्म आई है केरला स्टोरी, आप सब में से कितने लोगों ने देखी है वो? एनीवन हैव वॉच्ड इट? अंकित, इमरान। सो हियर इज अंकित हु वांट टू से समथिंग। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई फिल्म एक्सपर्ट हूँ नहीं, और केरला स्टोरी पे बात हो रही है तो मैंने सिर्फ इसका ट्रेलर देखा है, और मूवी मैं देखने इसलिए नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है थिएटर में फूकने के लिए। तो जो भी मूवी बनती है, डोंट वरी। हाँ, केरला स्टोरी का डिस्कशन करने से पहले मैं दो मूवीज़ के बीच में पैरेलल ड्रॉ करना चाहूँगा, एक द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी। ठीक है, तो इन दोनों मूवीज़ के आने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। क्यों? तो मेन रीज़न इसका ये है कि जब सोशल सर्कल में मूवी का अनाउंसमेंट होता है, उसका ट्रेलर आता है या कुछ भी आता है, उसके अराउंड बज़ होती है, तो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्टिक कमेंट होते हैं, तो लोग उसको देखते हैं, अपने अपने ओपिनियन बनाते हैं, जबकि मूवी में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो लोग अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू के होते हैं, दे कैन एक्सेप्ट द बिटर ऑफ ट्रूथ और फुल ऑफ लाइज टू। तो केरला स्टोरी का भी और कश्मीर फाइल, इन दोनों में कंट्रोवर्सी हुई। यही रीज़न है कि जनता इतनी इंटॉलरेबल हो गई है या इंटॉलरेंस फुल हो गई है। फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ भी तो की गई। हाँ, अब वो तो मूवी इसीलिए मूवी है वो, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्री रियलिटी होती है। क्लेमिंग विद फैक्ट्स, मतलब कि दे आर क्लेमिंग लाइक दैट दैट्स ऑल रियल। 32,000 नंबर, एवरीबडी क्लेम्स कि देयर व्हाटएवर दे आर पोर्ट्रेइंग दैट इज रियल। आई एम नॉट एग्री विद यू बिकॉज दे वांट देयर मूवी टू रन। समझ गया, आप कहना ये चाह रहे हैं कि पब्लिक उसे ज़्यादा तवज्जो दे रही है, फिल्म की तरह तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसे देखे, हाँ, और ज़्यादा उसे माइंड ना हाँ करे। हाँ, ठीक है, टेक इट एज ए एंटरटेनमेंट बिकॉज फिल्म आर मेड टू बी एंटरटेन्ड। हाँ, दिस इज द कोर ऑफ हाँ। मूवी इंडस्ट्री। और अगर सच्चाई की बात है, देन जो मूवी है, तो जिसको सच जानना होगा वो ही कैन डू ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड कैन नो द ट्रूथ मोर देन द व्हाट मूवी इज शोइंग। ठीक है, तो जनरल बात यह है, हर ऑडियंस को कोई भी मूवी हो, कोई भी शो जो डिस्कशन में आता है, जिसके खिलाफ, जिसके प्रोटेस्ट होते हैं, जिसको लोग एक दो पक्ष बनते हैं, एक लोग उसको प्रोपेगेट करेंगे, दूसरे उसको प्रोटेस्ट करेंगे, तो यही है कि वो नहीं होना चाहिए। सिंपल पब्लिक को देखनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और बस मज़े करो, और मेरी तरह पैसे नहीं है तो फूकने नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। थैंक यू अंकित। अच्छा, उसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, और तो सबने फॉलो अप तो की ही होगी एज बीइंग द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। सो क्या ओपिनियन है आपका, क्या क्यों हुई कंट्रोवर्सी, क्या है उसमें? See, first of all तो मैं ये कहूँगी that none of us has seen the film. उसके reasons differ कर सकते हैं, but one of the reasons why I haven't seen is that आज के समय में बहुत ज़्यादा data saturation है. There's too much overload of information, and the little information we have drawn from is either the news reports or the trailer. So as I was saying that why we don't put attention to films is because बहुत ज़्यादा data saturation है, and the little information we can draw is based on the trailer or the news reports that we draw, right? Okay. So if you could tell a little about trailer if you have seen it. So what is shown in the trailer is about story of three girls who have been firstly migrated and then recruited in ISIS and then brutalized there. So बट जो चीज़ें हमने अखबारों में पढ़ी, जो फैक्ट्स हमने देखे, तो वो ये थे कि एग्जेगरेट किया गया नंबर्स को, Right. और फिल्म पे इसको लेके बाद में उन्होंने बदल भी दिया। वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज इज कि हम कभी भी इस फिल्म के अगेंस्ट जाते हैं तो दे से कि हम फैक्चुअली गलत है, आपको क्या नहीं पता है कि ऐसा हुआ, या फिर आप डिनाई कर रहे हो। नो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। वी आर नॉट डिनाइंग द वैलिडिटी ऑफ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट हैव हैपेंड एंड द स्टार्ट्स एज यू मस्ट हैव सेड कि बोलते हैं, ऐसा विकिपीडिया में साइटेड है कि इतना लार्ज अमाउंट में वुमेन नहीं क्लेम करती है दैट दे हैव बीन ट्रैफिक्ड ऑल द वे टू ISIS और अफगानिस्तान और वॉट एवर गल्फ कंट्रीज, राइट? एंड
moving ahead, it also questions the integrity of the Kerala government. हाँ, Like yes. ये One more बताया point. जा रहा है कि क्या केरला गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ अराजकता है, there's all anarchy over there or यस what? सी बात ये है ना कि वो 3 लोगों की कहानी है, बट इट इज बीइंग शोन एज द होल केरला स्टोरी. Right, सो exactly. दैट्स द थिंग कि जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उस चीज़ को, अगर वो इसे 3 कहानी एक टाइटल दे देते तो वो थोड़ा मतलब स्टोरीज आर करेक्ट, Yeah, दैट इज exactly. ओके. So that is like they have given the film a title which is misleading in itself. It yes. shows the Kerala story. So जो नाम सुन रहा है उसको ये लगेगा film is about The Kerala का history या something, the cultural or social or whatever, right? Okay. But it does not encompass the entire population story. Yeah, that's about it. सो इमरान शिव, जैसे कि केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि पीपल आर मतलब कि आसपास में लोग फोर्स करते हैं या मतलब बहलाते फुसलाते हैं जो भी करते हैं. सो आप लोगों ने अपने आसपास कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? इट्स वेरी ह्यूमरस, बट मैं क्योंकि जो फिल्म ये कहना चाह रही है दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि हैव यू एवर फेस दैट? So, I am coming from, as you said, in the southern part of Kerala. So, in my town, you can divide it into three. The one part is fully concentrated by the Muslims, and the other part is concentrated by the Christians, Yeah, about the and the other part is secular, the I am coming about that, and the Hindus. And after the arrival of this Kerala story, there are so many secular stories coming out. So I recently had a story that a mother who is an Hindu, who doesn't have money to make her daughter marriage, and she seek help to the masjid committee, and the committee provided the masjid also the money and some amount of gold to make it happen. And that was one of the best example you can see what is the secular state is. And the sad reality is that the current government is promoting this movie, that making it tax free. And सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट? the central government. The central This government. the state government initially denied it, and it went to the High Court of Kerala, and the High Court of Kerala gave the permission because it is a freedom of speech, and they are allowed to do that, and the movies was released. But in certain places, in I think 7 states, the central government made this movie tax free, and they were promoting it. I don't know what is the reason behind it. और ये तब हुआ जब केंद्र सरकार ने इसे प्रमोट किया था, तब जबकि फैक्ट्स गलत थे. ठीक है, आई एम करेक्ट. बाद में फैक्ट्स चेंज किए गए जब थोड़ा उस पर बवाल हुआ और चीज़ें कोर्ट तक गई थी. बाद में फैक्ट्स उन्होंने फिर वो 35,000 से हटा के 3 कर दिए. What are your opinions on कि किसी एक कम्युनिटी का जो भी ट्रॉमा रहा है उस पे जो गवर्नमेंट्स कैपिटलाइज कर रही है, इज इट राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट या इट? दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि किसी ट्रॉमेटाइज फेस को फिर उसे फिर बहुत ज़्यादा दिखाना, एग्जेगरेट करना, फिर एक तरीके का वो होता है ना कि इट्स लाइक कि कुछ ख़त्म हो गया कोई दुख तो उसको कुरेद रहे हैं, तो वो वाली चीज़ क्या लाइक रही? सोशल हाँ, हार्मनी पे अभी नवाज अभी केरला में क्या चल रहा है कि मतलब कैसा माहौल है केरला में इस आफ्टर द फिल्म? फिल्म रिलीज होने के बाद घर तो नहीं गए? नहीं गए. बातचीत घर तो हो रही होगी. सो कैसा माहौल है अभी? I mean, नॉट द होल स्टेट बट योर ओन प्लेस, Personal नेबरहुड. experience, हाँ, पर्सनल whatever. एक्सपीरियंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल स्टेट, वी कांट वैलिडेट इट आल्सो बिकॉज जस्ट 2 पर्सन्स. बट आपके नेबरहुड में कैसा है माहौल, क्या है? so actually, after this film, like there are people who have not seen the film, so they are saying it as a political motive. बात करें तो मेरे दिमाग में तो पहले 3 नाम आते हैं जो मतलब मोहनलाल सर, फहद फाजिल एंड दुलकर सलमान. और 2 मूवीज़ जो मुझे बेसिकली याद आती हैं वो है दृश्यम, जो सबने देखी है, एंड फिर डब्ड वर्जन वाज आल्सो गुड, वेरी सुपर हिट, एंड द सेकंड वन इज़ जल्लीकट्टू. आप लोगों का सिनेमा को लेके, मतलब हमने उतनी मलयाली मूवीज़ नहीं देखी हैं, डब्ड वर्जन देखे हैं. आप लोगों का सिनेमा को लेके, बॉलीवुड को लेके क्या है? So films, when you're talking about films,
now we have the advantage of having a lot of content with the films. So the films from Malayalam film industry is known for this low budget films. So Minimum input, maximum output. yesterday, like me and Imran went for 2018. This is a film that is based on Kerala floods that happened during 2018. Its name is The title is 2018. 2018. Yeah. Everyone is a hero. Yeah. So there are many, Everyone is a hero. Everyone is and there are many different actors who come with very strong roles. There is Tovino Thomas, there is Indras, and Kunjaka Boban, there is Asif Ali, and there is Sudesh, and all of them, all of the characters have screen space in it, and all of the characters put a huge impact after seeing the film. And we were actually emotional, we were actually crying after watching the So film. this is a recommendation. Yeah, of course. Definitely. You Please should, watch it in theater, not in any OTT platforms. And it is one of the most grossing movie in Kerala, according to Kerala. एज अ होल आप मतलब कि अभी तो आपने कर लिए 2018 देख के, अगर आपको पूरा अगर बॉलीवुड से बताना हो जो चीज़ें मतलब जो मूवीज़ मलयालम में बनी हैं एक्सेप्ट दृश्यम एंड जल्लीकट्टू, कौन सी ऐसी मूवीज़ होंगी, कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ या एक्टर्स होंगे जिनको आप बहुत प्रेज़ करते हैं और आप रिकमेंड करना चाहेंगे और भी लोग देखें उन्हें? So in Malayalam, the two legends are like Mammootty and Mohanlal. Mammootty. So always we have fights between these two groups, fan clubs. So it's all fun, like going to fan shows, seeing films, and there we forget all other barriers and like There are clashes. there are like normal clashes, like Yeah, there are clashes, like who will put a higher cutout, like who will put the 30 feet cutout and who will beat it to the 40 cutout. ऐसा clashes होता है. and who will arrange the best fan show, and yeah, What how about फहाद एंड दुलकर? दुलकर ने तो हिंदी बेल्ट में भी काफ़ी काम किया है, एज वी हैव सीन. कारवां देखी आप लोगों ने? It's Irfan Khan, Dulquer Salman and Palak Muchal. It's a very good movie. First time I watched Dulquer there and I got fan कि मतलब क्या ही एक्टिंग करते हैं. And अब तो चुप और ये सीतारामम तो वो तो बहुत. सीतारामम is मलयाली मूवी और any? Telugu movie. It's a Telugu movie dubbed but in pan all. India, pan Indian. Pan Indian movie. हाँ, it's not from Malayali industry but हाँ, it recognized Dulquer as a superstar in the whole India. So what about Fahad? Fahad is a very phenomenal actor, I must say. मैंने उनकी एक दो फिल्में देखी है जो मलयाली नहीं थी. I would watch that. That was Pushpa and the Vikram. Fahad Fazil, मतलब मेरा तो mind blow कर गया. What about मतलब अभी जो upcoming Fahad's, superstars I mean, one more film we should add, Kumbalangi Nights, it has also got state award. So in that, but I will- Fahad Fazil has a very different role in it. So So who are the upcoming superstars? Mammootty and Mohanlal are the established one. Who are the upcoming? It's just Fahad and Dulquer, or there are someone else also who can? there are many actors emerging. Even like recently we have that Matthew and Naslan, and they are carrying characters with a fun element, with a kind of with a kind essence of the state of the culture. culture. So that brings a different. Can you name just 5 films which we all should watch for recognizing Malayali movies how they are? Not top, not best. Which you want to see us कि हाँ वो 5 फिल्में तो देखनी ही चाहिए. किसी की भी हो. 2018. 2018 and some of them are, what to say, there are so many good movies. I couldn't. Only 5. So if you are suggesting old movies, we have a lot of Movies with Any good impact. Old, new, and so of Mohanlal, I would suggest Chitram, which was a very famous movie. Then And there is another superstar, as you know, Prithviraj. Prithviraj Sukumaran. yes, Prithviraj Sukumaran. Very phenomenal actor. And he have two main important films which changed his life.
Like one of them is Ennum Ninde Moideen. Ennu Ninde Moideen means with lovely your Moideen. We write in a with lovely in the Moideen in the end of a letter, na Aisa. And the next one is Janaganamana, which was which was an eye open to the how politics works. And those two are phenomenal his movies. But please watch that Ennu Ninde Moideen. And there are other movies. He has like also directed one movie which became much more Lucifer. Lucifer is Yeah. phenomenal. उसमें मोहनलाल actor Mohanlal है. Yes, actor. yes. And Prithviraj is Prithviraj there. B, Yeah. he's the Prithviraj that directed he's the here. director. Yes, yes. Oh. And the second one is coming now. So he has done a lot of experiments in film, and yeah, his upcoming movie is Aad Jeevitham. Aad Jeevitham. There is a certain book called Aad Jeevitham, God Life, which have more than 150 edition of printing, and the book has been adapted to a movie now, and which is going to release in the next year I think. But phenomenal movie. Currently the trailer got out. And Drishyam and Jallikattu, the whole one knows. Yeah, yeah. तो Oscars तक गए हैं. Drishyam तो pan India successful हुई. Yeah. And that dubbed version. Mm, उन्होंने मतलब remake of Ajay Devgn sir. Just what Bollywood movies और Bollywood का क्या experience है? मैं just ये पूछना चाह रहा हूँ. आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं क्या है? I mean, we watch a lot of films in their own languages. So when we हिंदी में? yes, Oh, you we watch Hindi it very well. subtitles. Yes, हमें ही मलयाली नहीं of course. Yeah. So That's a subtraction for we us. we also watch even Tamil Telugu movies. So we even in films we don't put any barriers. We watch in this original language. तो So हिंदी की कौन सी ऐसी मूवी होगी जो आपको मतलब अच्छी लगी तुम्हें? Hindi. Have you seen the Hindi version of Drishyam? No. No. Because not any part. One, that two. is शाहरुख खान का कौन सा मूवी? शाहरुख खान is a global superstar. yeah. So The first List out, movie, list out. the first movie I watched of Shah Rukh Khan is शाहरुख खान is love. what is the name of that? You तुझ tell me में the रब context, दिखता I- है Yeah. क्या? वो है रब ने बना दी Rab, जोड़ी. that's the first movie I watched on Hindi, and Okay. then My Name is Khan. My Name is Khan is वो तो मतलब वो तो एक्टिंग सिनेमा के लेवल पे वो एक बड़ी प्रूवन मूवी है. and even Dilwala Dulhania. Dilwala- दुल्हनिया ले जाएंगे. Uh, तो all SR के कभी movies. खुशी कभी गम. कभी खुशी कभी. So no one else from SRK और कोई नहीं. Only SRK. ऐसा है. Salman Khan also like Bodyguard. Body. Any other? Any other? How about Chak De? Chak De, the hockey one. And Lagan of Amir Khan. Amir Khan. Lagan. And there are so many movies I watched, but I couldn't Recognize, मतलब recall it. हाँ, Yeah. okay. So any actor? It is Shah Rukh Khan or any other actor you? Pankaj Tripathi, Nawazuddin, you all know them. उनकी movies देखी हैं? Yes, and Irfan Khan. Irfan Khan. That is होए. Even Karwa with Yeah. Dulquer Salman. मतलब first time I recognize Dulquer. You wanna say anything? So अब हम ऐसे last करेंगे इस conversation को और at the last, this is a cherry on cake. Shiv Shankar will sing a Malayali song for us. Okay. So up to you, Shiv Shankar. So firstly, tell the context of the song because most of the audience is not from Malayali. So tell the context. So now I'd like to sing a song which is like it is known as Nadan Paattu, which means the folk song of Kerala. Folk song. So this song is based on the What is festival. The story or the meaning of the song? Firstly, describe that. Meaning of this, the song is based on the festival in Thrissur, which is known as Thrissur Puram. So the song tells about what all instruments they are using, and it is in a conversation between two people. Two people. So when we sing, I think Romantic or something else. no, like you're calling people to come and see the festival, Okay. yeah, and feel the vibe of that festival. So yeah. Now I can sing. Kanda ഞാനും വരാ തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ കാന്താ
ഞാനും വരാ തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത നീക്കന് കാനന് കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത കാന്ത ഞാനും വരാ തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ തിമിലയെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത തിബിലയെനിക്കൊന്ന് കാണണം കാന്ത തിമിലയെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത തിബിലയിലിക്കന് കൊണ്ടന് കാന്ത വെടിക്കെട്ട് എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത വെടിക്കെട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണണം കാന്ത വെടിക്കുട്ടി അതിലൊന്ന് കൊളുത്തണം കാന്ത വെടിക്കുട്ടി അതിലൊന്ന് കൊളുത്തണം കാന്ത കാന്ത ഞാനും വരാ തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ. Thank you. That was great. That was great. So this was all for today. और YouTube की परंपरा को ध्यान रखते हुए सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर. Thank you.